Okay, so we were talking about moles in the last few topics or in the last few lectures, sorry. So we are going to continue this topic as well because it is very important in the previous topic as well. So we need to be very efficient in this now. So that's why let's start with this. Okay, so if you remember, Bacho, we have discussed two formulae of moles. The first one is when the mass is given to you, you can find out mass over mr, right? You can find out the moles by mass over mr, right? And if the volume of any gas is given in centimeter cube, you can divide it by 24,000 to get the number of moles, right? You can find the moles of any gas by this formula as well. Or if the volume is in decimeter cube, so you can find by this formula, right? So these are two formula that we discussed in the last class, and I think we discussed about the number of particles as well. जी बच्चों, number of particles वाला भी कर लिया था ना हमने? Yes, sir. Oh, that's right. So the third formula that we discussed in the last class is if, for example, the number of particles given to you, number of particles like number of atoms, number of molecules, number of ions, so you can divide it by the Avogadro constant. So you can find the number of moles by this formula as well. And the last formula we are going to discuss in today's class, which is actually related to the concentrations, right? And this is for solutions, right? For example, if the solutions are given to you, the volume of solutions are given to you, and the concentration of volumes are given to you, so you can find out the moles as well, concentration into volume, right? This is the formula, but remember, volume should be in decimeter cube for this formula, right? If the volume is in centimeter cube, so you can even use this formula, concentration into volume in centimeter cube divided by 1,000, right? So you need to convert the volume in decimeter cube first, then you can multiply it with concentration, so you will get the number of moles, right? For this, bacho, it is very important for you to understand that the concentrations unit is mole per decimeter cube. It is fixed. Concentration का जो unit होगा वो हमेशा 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 mole per decimeter cube होगा, right? So that is why it is compulsory for us that we should use volume in decimeter cube as well. But examiner always give you the volume in centimeter cube. So remember this conversion, if the volume in centimeter cube is given to you, so first of all, you need to convert that volume into decimeter cube by dividing 1,000, right? And then you need to multiply with concentration to get the number of moles. Got it, bacho? Yes, sir. So let's talk about some examples. Okay, for example, आपके पास क्या है बच्चों? Example is actually, for example, if I ask to calculate the number of moles, right? And you have the question like calculate the number of moles, in 50 centimeter cube of 0.2 mole per decimeter cube NaOH solution. Right, this is the question. First of all, you need to understand what you need to use in this, which formula is going to be utilized in this question. This is very important. If you are not understanding कि कौन सा formula आपने use करना है, then it will be very difficult for you. So अगर आप formula use करना जानते हो, तब आप कर सकते हो आराम से solve कोई सा भी moles का सवाल. और अगर आप फॉर एग्जाम्पल नहीं कर पाए, तो ये यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो फिर आप फंस जाओ, राइट? अब देखें फंसते कहाँ हैं बच्चे, कहाँ पर बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. जस्ट लुक एट ओवर हियर, इट इज सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, राइट? इट इज सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. और बच्चों को हमने बताया होता है कि यार सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम जब भी होगा, तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, रिमेंबर ये वाला फॉर्मूला आप वॉल्यूम के लिए यूज करते हो, डेफिनेटली करते हो. ये वाला फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए यूज करते हो, डेफिनेटली करते हो. बट रिमेंबर बच्चों, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर गैसेस. दिस इज ओनली फॉर गैसेस. तो यहाँ आपने नहीं फंसना, यहाँ आपने ट्रैप नहीं होना एग्जामिनर के जरिए, ठीक है ना? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन. तो ये जो वॉल्यूम आपको गिवन है बच्चों, this is actually the volume of solution, not the volume of gases, right?
सो रिमेंबर दिस, ये वाला वॉल्यूम डिफरेंट है, ठीक है ना, ये वाला वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन के साथ है. जस्ट लुक एट ओवर हियर, द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू यू, यू कैन आइडेंटिफाई इट बाय द यूनिट. You can see this mole per decimeter cube is actually concentration, right? तो आपको ये पता होना चाहिए कि right now concentration is given to me, right, and the volume in centimeter cube is given to me. So number of moles कैसे निकलेंगे? Number of moles निकलेंगे इस वाले formula से, right? So we can find out the number of moles like concentration into volume in centimeter cube divided by 1000, right? So it's very simple for you now. You can use the concentration 0.2 and volume is 50 divided by 1000. You can calculate this, the number of moles. So let's check that how many moles are there in this solution. So it's actually 50 divided by 1000, that is 0.05, and once we multiply it with 0.2, it will give us 0.01 moles, right, bachcho? Yes, sir. Yes, sir. And if you want to find out the mass, for example, if you are willing to find out the mass of the solid of the NaOH which is required to make this solution, for example आप बोलते हैं सर मुझे ना 50 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाना है NaOH का और उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 0.2, तो आपने मोल्स निकाल लिए, अब आप मास भी निकाल सकते हो कि मैं कितना मास यूज करूंगा ये सॉल्यूशन बनाने के लिए. तो दैट्स वेरी सिंपल, वी नो दैट if you want to find out mass from moles, so it is simple, we can just multiply moles with mR to find out the mass. So right now the mole is 0.01, and if you can multiply it with 40, now you can ask, sir, what is 40? And I think you all know this कि हम पहले कर चुके हैं इसको. So it is actually mR of sodium hydroxide, right? So 0.01 into 40 will give you 0.4 grams NaOH. So this is actually the NaOH which is going to dissolve in water to form 0.2 mole per decimeter solution of 50 centimeters. Right, bachcho? Got the point? सर Yes. जी बेटे. सर ये आपके थर्ड फॉर्मूले में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? It is L. L means Avogadro constant, right? Which is 6.023 10 raised to the power 23, right? इसकी practice हम पिछले session में कर चुके हैं, तो don't worry about that. I can provide you the recording of that session. You will be like good in that, right? Don't worry about that. Okay? ठीक है. Yes. ये बताएं जो अभी लिखा है वो समझ में आ गया आप सबके? Any problem to any one of you? Clear है बच्चों? Yes, sir. I think you can solve some practice questions now, I think. So let's check, are you able to solve this or not? So it is the time to exercise, right? So let's check some questions, solve these questions to find out the moles and then mass of these solutions. For example, if you have 100 centimeter cube of 0.5 mole per decimeter cube sodium carbonate solution, right, bacho? So you need to find out the moles in this, then you need to find out the mass of sodium carbonate required to make this solution, right? For example, if you have 250 centimeter cube of 0.4 mole per decimeter cube KMnO4 solution, right? तो इसके लिए आपके moles कितने होंगे और आपको कितना required होगा KMnO4 ये solution बनाने के लिए, right? And the last is, for example, you have 2 decimeter cube of 1.5 mole. अच्छा, decimeter cube इस तरह भी लिख सकते हैं आप, mole per decimeter cube, ठीक है ना? Mole per decimeter cube of copper sulfate solution. Right, just try to solve this, bachcho. Just try to solve this. Just do it quick, and I think you are familiar with this, so you can easily solve this. और ऊपर example के लिए मैंने अभी तक question हटाया नहीं है, वो ऊपर ही मौजूद है, उसको देखकर आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? अब आपके पास आएंगे A levels के अंदर moles के, उसकी intensity increase होगी, फॉर्मूले तो वही यूज होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है ना?
बट आपको ये आना चाहिए कि आप कौन सा फॉर्मूला किस तरफ लगा सकते हो, आपको फेमिलियर होना है हर फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखें, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव HCl, राइट। HCl में हमने मिक्स किया, फॉर एग्जांपल हमने इसका रिएक्शन करा दिया, इसके साथ हमने इसका रिएक्शन करा दिया मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, राइट। व्हेन वी डू दिस, क्या बना आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है ना। एंड फॉर द बैलेंसिंग आई जस्ट राइट 2 ओवर हियर एंड द होल इक्वेशन is balanced now, right? This is balanced equation. Now for example in the question, examiners gave you that you have 50 centimeter cube of HCl and the concentration of this HCl bacho is 1.03 mole per decimeter cube, right? So examiner actually giving you what? Concentration and volume of hydrochloric acid, right? And they are asking for what? They are asking to find out the mass of magnesium chloride form. They are asking for the volume in centimeter cube of carbon dioxide produced, and they are asking for the number of atoms in water molecules, right? That is going to be formed in this equation. So that's pretty perfect question, which is actually giving you the overall review of the moles chapter. Every formula के बारे में आपको यहाँ डिस्कशन मिल सकती है। चलें देखते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। पहले मैं एक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गिव दूंगा, तो फिर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो राइट नाउ इस कॉलम में पहला वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस कॉलम में दूसरा और फिर तीसरा। सबसे पहले तो देखिए मोल्स निकालना कंपलसरी है। यू नो दैट कि सर ने आपको बताए हैं 3 स्टेप्स और उन 3 स्टेप से आपने हटना नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज मोल्स। तो मोल्स का पहला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी नो दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट मोल्स फ्रॉम दिस given information, so we can only use the formula concentration into volume, because यहाँ पर आपके पास क्या given है बच्चों, यहाँ पर आपके पास given है concentration। तो जब concentration given होगी और volume given होगा तो आप formula use करेंगे C into V। So you can use the formula concentration into volume, and we know that the volume is in centimeter cube, so we need to divide it by 1000, right? So the concentration right now is 1.03 and the volume right now is 50 over 1000. So let's check the number of moles. Over here the number of moles are 50 divided by 1000 into 0.0515। जी, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए कितने बच्चों? 0.0515। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। और बच्चों ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आए हैं? रिमेंबर दिस इज द नंबर ऑफ HCl मोल्स। ये HCl के मोल्स आए, ठीक है ना। ये आपने क्लियर रखना है अपने पास कि आपने किया क्या है, आपके पास निकला क्या है, ठीक है ना। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। दिस इज द सेकंड पार्ट जिसमें आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड दिस इज द थर्ड पार्ट जिसमें आपने निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर कि हम पहले फर्स्ट वाला करेंगे, ठीक है ना। आपको बताया हुआ है मैंने कि सबसे पहले आप क्या निकालते हो बच्चों? सबसे पहले आप निकालते हो मोल्स। मोल्स निकालने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है आपके पास? सेकंड स्टेप हमेशा आप क्या करोगे? सेकंड स्टेप इज ऑलवेज रिलेशन। आपने रिलेशन लगाना है, ठीक है ना। यू कैन सी दिस कि आपके पास अभी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो HCl के हैं, बट आपको मास चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड का। मास आपको चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड का और आपके पास मोल्स किसके हैं? मोल्स आपके पास HCl के हैं। तो आपको मोल्स मैग्नीशियम क्लोराइड के निकालना पड़ेंगे मास निकालने के लिए। तो HCl के मोल्स हैं, रिलेशन लगा के मैग्नीशियम क्लोराइड के मोल्स निकाल सकते हैं। एंड आई टोल्ड यू कि रिलेशन हमेशा कब किसका लगता है? गिवन वर्सेस रिक्वायर्ड। जो गिवन हो और जो रिक्वायर्ड हो उसके दरमियान रिलेशन लगता है। राइट नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? HCl, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू? इट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, सही है ना। सबसे पहले हम इक्वेशन में देखते हैं कि इनका रिलेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन HCl है आपके पास 2 और मैग्नीशियम क्लोराइड है 1, राइट। एंड इन द गिवन कंडीशन जो आपको
अभी राइट नाउ मोल्स दे दिए गए हैं डेटा के अंदर, जो आपको मोल्स दे दिए गए हैं HCl के, वो कितने हैं 0.0515, और आपको इससे कितने मैग्नीशियम क्लोराइड के मोल्स बनेंगे ये निकालना है आपने, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट इज गिवन कि अगर आपके पास HCl के 2 मोल्स हों तो वो 2 मोल से मैग्नीशियम क्लोराइड का 1 मोल बनेगा, ये इक्वेशन बता रही है आपको। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन आपको बता रही है कि 2 HCl के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो 1 मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये तो इक्वेशन बता रही है। अब हमें जो उसने मोल्स दिए हैं, उसने बोला कि आपके पास 0.0515 मोल्स है, 2 से 1 बन रहा है तो 0.0515 से कितने बनेंगे, इट इज रिलेशन, ठीक है ना। तो आपको पता है कि दिस शुड बी ओवर देयर, दिस शुड बी ओवर देयर, तो आपके पास क्या बनेगा 2x is equals to 0.0515 and you want to find out the value of x, so it will be 0.0515 divided by 2. So it will give you the number of moles of magnesium chloride. So 0.0515 divided by 2 will give you the number of moles of magnesium chloride, which is 0.02575. These are the number of moles of, these are the number of moles of, you need to remember this, x है क्या चीज, these are the moles of magnesium chloride, ठीक है ना। अगर x लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्या चीज है, आपको पता होना चाहिए क्या चीज है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पहला स्टेप पहला स्टेप क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा स्टेप आपको बताया मैंने कि उसके बाद आप लगाते हैं रिलेशन। अब बात आ जाती है तीसरे स्टेप की। तो बच्चों तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरे स्टेप में आपको मास निकालना है, आप मास निकाल लें। और मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट मास सो इट इज मोल्स इनटू mr। क्योंकि आपको निकालना है मास किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो आपने मोल्स भी किसके यूज करने हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के। आपने mr भी किसका यूज करना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का mr कितना होगा, इट इज 24 + 71, इट इज 95, इट इज 95। तो जब आप इसको 95 से मल्टीप्लाई कराओगे इट विल गिव यू 2.446। आप इसको लिख लें 2.45 राउंड फिगर करके, तो दैट्स ओके। दिस इज द मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि प्रोड्यूस होने वाला है, राइट बच्चों, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। Yes. Yes, sir. डायरेक्टली रिलेशन, जब आप डायरेक्टली रिलेशन लगाएंगे तो वी नो दैट रिलेशन इज ऑलवेज गिवन वर्सेस रिक्वायर्ड, राइट। गिवन क्या है आपको HCl, रिक्वायर्ड आपसे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट इज 2:1, right, and according to data which is given to us it is 1, it is 0.0515, and again x is required which is the number of moles carbon dioxide के हमें required है, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है और x की वैल्यू भी सेम आएगी, राइट बच्चों। सो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास इसके भी सेम ही आएंगे। एंड द लास्ट थिंग इज आपने थर्ड स्टेप में क्या निकालना होता है, हमेशा रिक्वायर्ड वेरिएबल आपके पास इस वक्त क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। एंड रिमेंबर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, क्या है बच्चों, ये गैस है। सो रिमेंबर गैस का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो मोल्स को आप क्या कर सकते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24,000, आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, राइट बच्चों। तो आपके पास जो भी मोल्स हैं 0 पॉइंट, इस वक्त हमारे पास कितने हैं 0.02575, इसको अगर हम 24,000 से मल्टीप्लाई करा दें so you will get what the volume of carbon dioxide which is going to produce is 618 centimeter cube, right बच्चों, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Then the last thing is about water, and again over here the relation is again same, so it is relation of HCl with water, right, and it is again 2:1 and it is 0.0515 और x, और आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर भी इतनी ही आ रही है 0.02575। तो ये आपके पास आ गए मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है,
आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम विच इज एक्चुअली द थर्ड रिक्वायर्ड थिंग ओवर हियर, ठीक है ना। अब आप देखें, आपको पता है इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स राइट नाउ, वाटर इज एक्चुअली मॉलिक्यूल, वाटर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड, इट इज मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए वी नो दैट मोल्स को मल्टीप्लाई कराएंगे एवोगाड्रो कांस्टेंट से। सो राइट नाउ हमारे पास जो मोल्स हैं वो कितने हैं, हमारे पास मोल्स हैं 0.0275 और एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है 6.023 10 raised to the power 23। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएं जीरो इससे, तो वी विल गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इतने पानी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बट द रिक्वायर्ड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एटम्स। सो वी नो दैट एक पानी के मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूल को आप किससे मल्टीप्लाई करा दो, 3 से करा दो, यू विल गेट व्हाट, नंबर ऑफ एटम। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यू विल गेट 0.465 10 raised to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर और नॉट? सर एक सवाल है। जी जी पूछें, 10 सवाल पूछें बेटे। सर यहाँ पर आपने मोल्स को जो डिवाइड बाय 2 किया है, जिसमें आपने लिखा 0.02575, जी तो सर इसको हम लोग ऐसे ही नहीं लिख सकते 0.0515/2? अपॉन 2 करके लिखना चाह रहे हैं, फिर भी डिवाइड तो कराएंगे ही ना बाद में जाके। तो सर वो डिवाइड यहाँ पर शो करना लाजमी है? मर्जी है आपकी, आप यहाँ कराएं बाद में कराएं, आंसर सही आना चाहिए आपका। ठीक है सर। ठीक है, देखो मसला पता है क्या है, मसला ये है कि अगर अगर आप जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका फायदा है। एक्चुअली आपके पास जो पेपर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो एग्जामिनर आपको पेपर देता है ना, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है एरर कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना। आपके पास एक ऑप्शन होता है, क्या होता है, एरर कैरी फॉरवर्ड का एक ऑप्शन होता है। और अगर अगर आप डायरेक्ट वाला स्टेप करना चाहते हैं जैसे आप बता रहे हैं ना, आप कर सकते हैं डायरेक्ट भी, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप कहीं मिस्टेक करोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका। फिर वो जो एरर कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन है वो आप फिर यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे ना। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में बच्चों को इसलिए कराता हूँ ताकि अगर वो कहीं मिस्टेक करता भी है तो 1 नंबर घट जाए, 2 नंबर मिल जाए एटलीस्ट, है ना। तो इसलिए मैं स्टेप वाला सॉल्व कराता हूँ। आपको डायरेक्ट वाला करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दैट मेक सेंस ना, आप सॉल्व कर सकते हो उसको। लेकिन मैं बच्चों की आसानी के लिए ऐसा कराता हूँ ताकि आपको नंबर मिले। अभी हमारे साथ यहाँ अनस मौजूद है, मेरे ख्याल से अनस आप हैं यहाँ पर हमारे साथ? अनस है, अनस बताइए जरा, आपने इसी इसी फॉर्मूले को और इसी पैटर्न को फॉलो किया था अभी एग्जाम में? जी जी। आपका क्या ग्रेड आया? ए स्टार। ए स्टार। ये ए स्टार किस वजह से आया, ये ए स्टार इस वजह से आया कि आपने इसको स्टेप्स को फॉलो किया। सिर्फ यही स्टेप नहीं, बहुत सारे स्टेप्स मैंने अनस को और अनस के साथ जितने भी बच्चे थे उनको सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बच्चे का इसी तरह ग्रेड प्रोड्यूस हुआ। तो अगर आप भी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो उसमें आपका ही फायदा है, ठीक है ना। और अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट चीज समझ में नहीं आती, फिर सेंस नहीं बनता ना आपका। और स्टेप में सबसे अच्छी बात ये है कि अगर अगर कहीं एक मिस्टेक होगा तो उस स्टेप में सिर्फ उसी के नंबर घटेंगे, बाकी आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं बात को बच्चों? सर Yes, इसमें sir. आपने मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों करा है? मल्टीप्लाई बाय 3 इसलिए किया है क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। तो पहले हमने निकाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पानी का मॉलिक्यूल्स निकाले। जब पानी के मॉलिक्यूल्स निकाले तो आप देख सकते हैं पानी होता है H2O। H2O में कितने एटम्स हैं, एक H2O में कितने एटम्स हैं, एक H2O में कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, राइट? ठीक है 3 है सर। ना, इस वजह से हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। एक पानी के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स आपके पास राइट नाउ हैं उसमें कितने होंगे, आपने मल्टीप्लाई बाय 3 करा दिया। सही है, ठीक है सर। समझ में आ गया सब बच्चों को? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सर समझ में आ गया। चले मैं फिर एक क्वेश्चन दूं, आप करेंगे सॉल्व इसको। यही तीनों चीजें, अब देखें ये एक सवाल नहीं था, ये पेपर में आपके पास इतना भी आ सकता था, ये पेपर में आपके पास इतना भी आ सकता था, ये पेपर में आपके पास इतना भी आ सकता था। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या दिया आपको, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दिया। मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दिया HCl का,
अब आपने उस कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम से क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकालने के बाद आपने ये भी निकाल लिया कि मैग्नीशियम क्लोराइड का मास कितना बनेगा, आपने ये भी निकाल लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बनेगा, आपने ये भी निकाल लिया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे और उसके अंदर कितने एटम्स होंगे। इतनी सारी चीजें आप निकाल ली। इवन क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल सकते थे, आप पानी का भी मास निकाल सकते थे, और आप मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना यूज होगा वो भी निकाल सकते थे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेकियोमेट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेकियोमेट्री, यानी कि रिलेशन। आप एक चीज आपको गिवन हो तो सब चीजें आप निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है भाई? यस सर। चले मैं एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, और इस क्वेश्चन में आपने करना है सॉल्यूशन हर एक चीज का जो मैं आपसे पूछूं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज कि आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। यू जस्ट ऐड दिस सल्फ्यूरिक एसिड to for example potassium hydroxide. When you add this, so you will have potassium sulfate and water molecules to form, right? This is the balanced chemical equation, right? So the question is, for example, sulfuric acid is given to you is 100 centimeter cube in volume, and the concentration of this is 0.2 mole per decimeter cube, right? And the question is, what is the mass of potassium sulfate is going to be produced, right? The unit of mass is gram. You need to find out this, and you need to find out the number of molecules. That's fine. If you are going to find out the number of molecules of water that are going to be produced. This time you are not going to multiply with 3 because we are asking for molecules only, not atoms. Right, bacho? So just solve this, right? This is your homework. This is your homework question number 1. And question number 2, I am writing over here. For example, if hydrogen gas is passing through copper oxide, so it will form what? Copper and water molecule. So the question is, for example, 75 gram copper is producing, right? So the question is, how many number of atoms required in copper oxide to form this amount of copper, and what is the volume in decimeter cube of hydrogen required for the formation of 75 grams of copper, right? This is the second question. And then the third and last question is, for example, you have sodium carbonate, and this sodium carbonate is adding to the like HCl. So it will form what? It will form sodium chloride, carbon dioxide, and water molecule, right? And the balanced chemical equation is like this, right? So the question is, for example, if the concentration is given to you, like concentration of sodium carbonate is given to you, it is a 1.75 mole per decimeter cube sodium carbonate given to you, right? And the volume of this is given to you like 1.75 centimeter cube. So what is the mass of sodium chloride going to produce, right? What is the volume of carbon dioxide which is going to produce in centimeter cube? And what is the number of atoms of water molecules are going to be formed, right? But so these are 3 questions that you need to solve and you need to submit before the next class, so I can understand that how much you are gaining in the class, so I work accordingly then, right bacho? Just take a picture of this homework. डन हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलें, ये आपने होमवर्क करना है और कल इंशाल्लाह दोबारा 10 बजे हम मिलेंगे और इस होमवर्क को देखते हुए अंदाजा लगाएंगे कि आप कितनी बात को समझ चुके हैं। उस हिसाब से फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें आप सब। इंशाल्लाह कल की क्लास में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। टेक योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।
Allah Hafiz, sir. Allah Allah Hafiz, बच्चों, Allah Hafiz.